Assalamu alaikum. Our group 1 was assigned to prepare a short tutorial about the basic introduction and working of Ansys software. So I will brief you about its interface, its introduction, working, and a basic working of. We will run a basic analysis on a beam. So first of all, here is the interface of the ANSYS, and on the left side we have analysis systems. There are different analysis systems depending upon the type of analysis we want to run, as if like temperature, flow, physics, and there are different type of analysis we can run on ANSYS. The most common and familiar one is static structural, and we will run our analysis on static structural. So first step is that we will drag this into this project schematic. This right side of the window here, it's also mentioned that this is project schematic. So here this will appear on the top. There is written static structure. It means that we have chose the static structural analysis. So here is engineering data. मीन्स एक्चुअली दीज आर द स्टेप्स, ये सारे स्टेप्स हैं, मतलब इन स्टेप्स में हम एनालिसिस परफॉर्म करेंगे. फर्स्ट वन इज इंजीनियरिंग डेटा, then geometry. We will make a geometry in space claim. Then model, we will import that geometry into our model. Then setup, mean we will define load, mesh, and etc, all the things. And solution and results, we will see the desired things like stresses, deformations, whichever we want to calculate about our model, our geometry. So first of all, we will start with the engineering data, and we'll double click it, and here we will be shown different materials. By default there is structural steel. We can add different new materials in it. For that we will have to assign it properties like all its compressive strength, yield strength, and all the properties that will be needed. So we will continue with the default setting, that is structural steel. So we will close this tab and will again come to this. No, the next step is geometry. So we will double click it, and actually we want to draw our shape in space claim. So we can right click it. So now we will right click it on the geometry, and we will click on the new space claim geometry. So it will take some time to open a new window of the space claim in which we will draw our geometry. So here a new window is opened, that is of space claim, in which we will draw our geometry. So here first we will define our units. We will go to file, then here space claim options, and then units, and I want to select units as metric, and already here metric is selected and millimeter. So we will click OK. Now I want to draw up shape. So first I will select this sketch plane, and now I can draw in any plane like XY plane, XZ plane, and YZ plane. I want to draw my shape in XY plane, so I will select this plane, and then if I click on this plan view, then I can see it in 2D shape. So I want to draw a beam, so I will select rectangle and click at this origin, and now I have to input its length, that is 2000 millimeter. So once I have put this length, I can click or press tab, and my dimension will be selected to another, like height. Now I have to give its height, that is 200 millimeter, and then I will press enter. So here I have beam in 2D shape that has length 2000 millimeter and a height of 200 millimeter. So here is this 2D shape. Now if I click on this first 3D shape, so now this beam will be converted to 3D shape. 3D. Now if I press my mouse middle wheel, I press and then rotate, so I can rotate or move this beam.
So now what I have to do is to convert this 2D shape into 3D shape. So what I will do, I will use this pull command, and I will select my face that I have to extrude, and I will select this, and now I can push it backward. So I want to keep its like thickness as 100 mm. So I will select this, enter this, and press enter. So here is our beam that has a length of 2000 millimeter, a height of 200 millimeter, and a thickness of, or a width of, 100 mm. We have drawn this. So now we have a beam, and now to run finite element analysis on this beam, first of all we have to apply loading, and for that purpose I want to uh, assign a middle portion of the beam on which load will be applied on this face. ठीक है, हमें मतलब एक दरम्यान में एक पोर्शन असाइन करना है। वो अगर मैं चाहती हूँ कि पॉइंट लोड सेंटर पे लगे, तो एक सेंटर पे एक पोर्शन होना चाहिए, ठीक है, जो एक फेस हो, जिसको बाद में हम असाइन कर सकें कि लोड ने इधर यहाँ पे अप्लाई होना है, स्पेसिफिकली यहाँ पे होना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस फेस को स्प्लिट करेंगे। वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल स्प्लिट दिस फेस, and for that purpose we will go to design, context menu in design, then split. We will choose the split, and now I will select my face on that which I want to split. So first of all, from this side, the total length of the beam is 2000 mm. So I will split it 900 mm from both the sides. Then I will get a 200 mm space in the middle on which the point load will be applied. So I am going here. I am able to drag this, and now I can enter here 900 mm, and then I will press enter. Now it had split this surface in at 900 mm from this side. Now same I want to do from this side, that I want to split the surface at 900 mm. So I will again go the command has not selected, so again select split, and then we will apply here, and now from this edge we will measure the distance, and here we will press tab, then 900 mm, and now enter. So it has split the surface, and now at this patch we will apply our load. Now for our satisfaction, so we can measure it as well, that our directions are accurate and up to our measurement. So we will go to this context menu and this measure tab, and here I will select this measure, and now I can measure this line, and here it's saying that it's 900 mm, and this line also this line, only this line, this is 900 mm. So it means that we have split our face, this side of beam accurately. So now after drawing this geometry, this model, now I can close this tab, and here if we will save our file, then we can save it, but if we don't, then it will be automatically saved, and when we will open the model tab, like in the last project schematic, then this shape or geometry will automatically be shifted there. So we are closing this tab. After completing the geometry, then we open this model tab, and in this we have all the geometry of this beam is already shifted here. So now we will have to on the left side we can see that here we have geometry, and first if we select that we have only one body, solid body, not in the parts. So on the second, if we click on this material, then we can see that here is structural steel, and that we selected. This was present in default setting, so we used it as and we cannot change its properties now. If we want to change the properties of any material or assign a new material, then we can go on new material or modify the material. So here is the coordinate system, and now
we will draw a mesh. So basically in finite element analysis इसमें होता है ऐसे कि हम एक किसी भी बॉडी को mesh में चेंज करते हैं, एक इंडिविजुअल एलिमेंट्स में चेंज करते हैं, और वो हमें जो रिजल्ट मिलता है वो सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल एलिमेंट्स का रिजल्ट होता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये उसका बेसिक प्रोसीजर है फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस का। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि एक मैश में चेंज करना होता है पूरी बॉडी को। तो इसकी वजह से हम लोग पहले इसका मैश क्रिएट करेंगे और फिर उस पर फर्दर जो होगा वो लोडिंग अप्लाई करेंगे और फिर अपना जो है वो एनालिसिस रन करेंगे। सो नाउ इसको मैश में कन्वर्ट करने के लिए हम इस मैश पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास ये लेफ़्ट बॉटम साइड पे मैश की डिटेल्स आ रही हैं। अब सबसे पहले हम इसको, क्योंकि मैश बनाने के लिए हमें इसको डिफरेंट एलिमेंट्स में डिवाइड करना है, तो एलिमेंट्स के हम पहले साइज डिफाइन करेंगे। फॉर दैट पर्पज़ वी विल गो इन दिस कॉन्टेक्स्ट मेन्यू इन दिस मैश एंड देन साइजिंग। नो अब हम देखना चाहते हैं कि यहाँ पे हमने एक साइजिंग किस पे अप्लाई करनी है, कि पूरी बॉडी पे करनी है, कोई एक किसी एक फेस पे हमने मैश अप्लाई करना है, तो हम पूरी बीम पे मैश अप्लाई करना चाहते हैं। इसके लिए हम लोग यहाँ से ये पूरी बॉडी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे। अभी पूरे बीम जो है यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है, देन वी विल क्लिक हियर अप्लाई। तो अभी पूरे मतलब once it turned blue then it means that the whole body is selected to be converted into a mesh. सो यहाँ पे हमारे पास ये हो गया। अब यहाँ पे है एलिमेंट साइज, हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे हम 50.0 mm लिख सकते हैं, या फिर हम इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स को भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये 0.10031 mm मीटर कह रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे हमारे पास है सॉफ्ट एंड हार्ड। तो अभी हम इसको फ़िलहाल बिहेवियर में इसको सॉफ्ट के तौर पे, मतलब एक फ्लेक्सिबल बॉडी के तौर पे हम इसको लेके चल रहे हैं। सो वी विल सेलेक्ट दिस, और अब हम यहाँ से ऊपर इस मेन्यू में हम क्लिक करेंगे जनरेट पे। ओके, सो इट विल टेक अ व्हाइल एंड इट विल कन्वर्ट दिस इनटू अ मैश। Now here this mesh is produced on whole the beam, and our whole body of the beam is divided into small elements, that is mesh. So now we have to specify load and the boundary conditions to run the analysis. Boundary conditions mean supports. So I will go at static structural, and here you can see in the context menu that we have loads and supports. If I want to apply fixed support at both the ends, so I will choose fixed support, and here I will click at this end now and apply. So once it turned blue, it means fixed support has been applied to this end. So same thing I want to do on the other side of the beam. So I will press escape and I will rotate this beam, and now I will again choose fixed support, will paste it here and then apply. So now fixed support has been applied to both the ends. Now I have to apply the load. Now I will here this force I will consider as load, and I will click on this, and now I will select a patch on which I want to apply the load. So we have already specified a central patch of the beam on which we will apply our point load. So I will select first this and then apply. So now my load will be applied at this point, that is marked as red region. So here we can divide it into components, because I want that to apply the load on downward only in y direction. So from here define by, then I will click components, and here only I will keep all the other component like x component, z component as 0 Newton, while I will change only the y component. I want my load to be 20 kilonewton downward, so I will enter minus 20,000. So here you can see we have a point load at the center of the beam, and this is 20 kilonewton in the y direction downward.
So now we are all set. We have defined the fixed supports at both sides of the beam, and a point load at the center of the beam. And now we want to run analysis, and we want to solve it using finite element analysis. So the only thing we have to do is hit this solve command, and now it will solve दिस हमें ऐसे लग रहा है कि इसने कुछ भी हमें इनपुट आउटपुट या कुछ भी रिजल्ट इस तरह का नहीं दिया, लेकिन अगर हम यहाँ पे सॉल्यूशन टैब में जाएं तो हम देखेंगे तो कि आवर कॉन्टेक्स्ट मेन्यू विल बी चेंज्ड, और अब यहाँ पे वी कैन सी डिफॉर्मेशन, स्ट्रेन, स्ट्रेस, एनर्जी, लीनियर स्ट्रेस, वॉल्यूम, कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, ये सारे. अब यहाँ पे अगर हम सेलेक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल आई वांट डिफॉर्मेशन, एंड इन डिफॉर्मेशन मुझे टोटल डिफॉर्मेशन चाहिए, मैं टोटल डिफॉर्मेशन को यहाँ पे सेलेक्ट कर दूंगी, और यहाँ पे स्ट्रेन में आई वांट इक्विवेलेंट वॉन मीजेस स्ट्रेस, और स्ट्रेस में मुझे नॉर्मल स्ट्रेस चाहिए. ठीक है, ये सारी चीज़ें जो भी मैं इधर से सेलेक्ट कर रही हूँ वो मेरे इस यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ऐड हो रही हैं कि मुझे स्पेसिफिकली ये चाहिए, इन सब का ये मतलब है. ठीक है, तो what I will do then, once I have selected them, I will again click, hit the button solve. So now it will again solve it. और अब you can see its deformed shape, कि वो जो हमने लोडिंग अप्लाई की थी उसके अंडर ये किस तरह से डिफॉर्म होगा. मैक्सिमम डिफॉर्मेशन इसकी, क्योंकि पॉइंट लोड सेंटर पे था और सेंटर पे हुई, और यहाँ पे ये जो हमारे पास टेबल बना हुआ है, यहाँ पे ये हमें क्या शो कर रहा है. सबसे पहले ऊपर ये नॉर्मल स्ट्रेस, स्टैटिक स्ट्रक्चर के नीचे लिखा हुआ है नॉर्मल स्ट्रेस. ये सारी जो डायर है ये हमें नॉर्मल स्ट्रेस की शो कर रहा है, और यहाँ पे ये वैल्यूज़ हैं. एनसिस में जो है वो हमारे पास जो पॉजिटिव वैल्यू होगी वो टेंसाइल स्ट्रेस होगा, और जो नेगेटिव वैल्यू होगी वो कंप्रेसिव होगी. ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो इसका क्या मतलब है कि जो इसकी टॉप सरफेस है वहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेस है, और जो इसकी बॉटम सरफेस है अगर हम इसको रोटेट करके देखें तो बॉटम सरफेस पे इसकी टेंसाइल स्ट्रेस है. ठीक है, अब हमारे पास अब हमें अगर कोई और चीज़ देखनी है, जैसे इसमें टोटल डिफॉर्मेशन है. अब हमारे पास, जैसे हमने पहले देखा नॉर्मल स्ट्रेस का, इसी तरह अगर यहाँ पे टोटल डिफॉर्मेशन को यहाँ पे क्लिक करते हैं तो अब यहाँ पे सारी हमें डिफॉर्मेशंस दे रहा है, और अब डिफॉर्मेशन के लिहाज से बता रहा है कि बीम जो है हमने जिस तरह उसको मैश में क्रिएट किया था, तो अब दरमियान में जो होंगी ये दरमियान में कौन सी हैं, पॉजिटिव डिफॉर्मेशंस हैं, और जो इसकी जैसे जैसे हम दरमियान में मैक्सिमम है, और जैसे जैसे साइड पे जाते हैं तो यहाँ पे ज़ीरो डिफॉर्मेशन है, ये ज़ीरो मिनिमम लिखा हुआ है, जो ये डार्क ब्लू कलर है ये इसको इंडिकेट कर रहा है. इस तरह अगर हम इक्विवेलेंट जो इलास्टिक स्ट्रेन है उसमें जाते हैं तो उसके हमें हर जो है वो हमें एक पॉइंट की, हर मैश की हमें ये वैल्यू दे रहा है, और यहाँ पे एक पूरा एक पैटर्न है कि किस तरह से वो चीज़ें चेंज हो रही हैं. ठीक है, अब यहाँ पे ये है कि ये जो प्रॉब ऊपर है इस कमांड को यूज़ करते हुए हम किसी भी, उसको हमने लिया, अब यहाँ पे यहाँ पे मैंने अपना ये माउस रखा, कर्सर रखा, तो यहाँ पे हमें ये वैल्यू दे रहा है, और यहाँ से हमने क्योंकि इक्विवेलेंट इलास्टिक स्ट्रेन चूज़ किया हुआ है तो मतलब इक्विवेलेंट इलास्टिक स्ट्रेन की वैल्यू ये हमें मिल रही है. यहाँ पे इसकी ये वैल्यू है, यहाँ पे ये वैल्यू है, हम क्लिक करें तो वो वहाँ पे उस नोड पे वो मतलब पिन हो जाएगी वैल्यू. ठीक है, इसी तरह अगर यहाँ पे मुझे चाहिए, या मैं चाहती हूँ कि इस बीम को रोटेट करूँ और दूसरी साइड पे उसकी किसी भी पॉइंट पे मैं वैल्यू लेना चाहती हूँ, और अगर मैं अगर इक्विवेलेंट स्ट्रेन की नहीं, मैं टोटल डिफॉर्मेशन की कहती हूँ कि मुझे बिल्कुल यहाँ पे इसके सेंटर पे यहाँ पे वैल्यू चाहिए, तो ये नोट 29 पे भी मुझे वैल्यू दे देगा, या यहाँ पे चाहिए, अब यहाँ पे ज़ीरो है क्योंकि हमारे पास उसने बताया कि सपोर्ट्स पे जो है डिफॉर्मेशन जो है वो ज़ीरो है. तो इस तरह से हम इस सारे इसको ये जो सारा जो भी हमें डिज़ायर्ड हो हम उसको सॉल्यूशन टैब में जाके यहाँ से उन सब चीज़ों को ऊपर कॉन्टेक्स्ट मेन्यू से सिलेक्ट कर सकते हैं, और फिर हम दोबारा उन सब चीज़ों को विजुअलाइज कर सकते हैं, और उन सब का जो एक न्यूमेरिकल डाटा भी हम लोग ना सिर्फ उसका विजुअल हमें मिलेगा कि वो किस तरह से डिफॉर्मेशंस और स्ट्रेसेस उसको चेंज कर रहे हैं, बीम की शेप को, उसकी बॉडी को, ना कि ये हमें मिलेगा, बल्कि हमें उसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ भी हम उसकी आसानी से प्रॉप की कमांड से भी देख सकते हैं कि किस पॉइंट पे क्या उसकी स्पेसिफिक वैल्यू है.
To convert all this, all our outcomes, if we want all our data that we have obtained from like deformation values, stresses, and strains in a report form. So we will go to home and we will click on this report preview. And once we will click at this, it will generate our this project uh, report. Like this is our model, and here are all the values, units that it has used, then model, then its properties like structural steel and all that. And at last we have these graphs and all the analysis that we have run. It will give us into a form of report. This was all about the very basic introduction of the ANSYS, and how this was a very basic analysis that we have run in our tutorial. और वैसे जो ANSYS है वो बहुत ज़्यादा complicated geometry और loading conditions के लिए यूज़ होता है, जहाँ पे हम analytical solutions को नहीं यूज़ कर सकते. और दूसरा ये बहुत ज़्यादा इसका ये एडवांटेज है कि ये एक्सपेरिमेंटल हमें उससे बचाता है, कि बजाय इसके कि ये सारा एक हम बीम बनाते, जो अभी भी हमने सारा इस पर रन किया है कि एक पहले बीम बनाते, उस पर लोडिंग्स वगैरह लगाते एक रियल में, तो ये हमें उससे बचाने की वजह बहुत ज़्यादा प्रिसाइज और एक्यूरेट रिजल्ट्स देता है. और वी कैन गो फर्दर इनटू दिस सॉफ्टवेयर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वास्ट है, इसकी बहुत ज़्यादा एक्सटेंशंस हैं, और हर किसी भी तरह का हमें एनालिसिस करना हो, हम उसका एनालिसिस सिस्टम से जाके वो एनालिसिस पहले चूज़ कर सकते हैं, और फिर उसी के रेलिवेंट हम उसमें डिफरेंट बॉडी शेप्स ड्रॉ करके उसकी बाउंड्री कंडीशंस उसको असाइन करके, और हम बहुत से इसमें कॉम्प्लिकेटेड फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हम एनालिसिस रन कर सकते हैं यूजिंग फाइनाइट एलिमेंट मेथड. And this was all about this tutorial. So thank you.